Quand il y aura l'accueil, s'il y a une poignée de main en haut, on s'avancera, on se mettra au centre dans tous les cas. C'est parce qu'il y a d'autres cortèges qui vont arriver avant. Oui, exactement. Mettez-vous là sur une photo. Si on peut plus mettre un semaine, si on peut plus mettre un semaine, on est stationné quoi. Je vais. On peut changer? Bah non. C'est pas prévu. Je veux bien que tu tiennes un peu de... Ouais, histoire que... ça va arriver. Bonjour à tous. On attend le
On va remonter, on vous laisse accueillir. Ah, on remonte tous, hein. Vous accueillez le Premier ministre. Hop. Hop. Hop.
Oui, voilà, c'est ça. कितना गले मिलेगा भाई? 10 गले मिलवा लो। सही बात। 10वां गले में थोड़ी लगा सकता हूँ अंदर का 10वां तो मिल गया। 10 मिनट तो बचा ले तुम अंदर जाके। कहाँ छुपा रहा था तब? और टॉयलेट भी कर जाता है, पत्थर के ऊपर आ रहा था, तुझे भगाई भी हो। वो बहुत अच्छी है। बड़ा हो जाता है, बस खेल लगा रहा है। पानी क्या आता है? ये भी उड़ाते हुए चले जाते हैं। हिसाब से आ रहा था। हाँ मेरी जिंदगी की बात है। पहले से क्या ही मिलेगा नहीं बात को ये बता दो। बाहर की लड़की भी आ रही है। मेकअप करके आ रही है, कल भी मेकअप करके
अच्छा मुझे किया है मैं जानते थे चल लिए बच्चे भाई अगली बार तेरी बात मान गया कौन था समुद्रों का खाना तो करा खाना तो खाना खोला भी अब वो ऊपर लगाएंगे तो कार आते हैं बोलो फिर कार आते हैं तो बारिश की पूरी वीडियो दिखा दी उनको बोलिए समुद्र जगह तो भी पीएम नहीं चला अरे तो किसी लगा के तो कुछ अच्छी शूटिंग करता हूँ ये प्रोजेक्ट करेंगे भाई को बताना हम बोलते हैं जैसे बताना कि ज़्यादा भी घटना ऊपर बोलते आप भी लाइट ललित आप भी लाइट वाली दुकान में देखिएगा लाइट वाली दुकान में सही ऐसी क्या याद नहीं लाइट जगह सुन तो इधर आइए जैसे मैंने तुम्हें एक अच्छा दिखाई तो यहाँ पे कुछ नहीं लिया बदलाव हम जाते हो लिखा होता अरे भाई तो कभी नहीं जाता हूँ चला मारा जाओगे चार बजे में बाहर हो जाती है पूरा ठीक कल फर्स्ट आ गए कल ही मेरा तो आ रहा है परसों मेरा ही बात अब यही क्या है पता है ना दुकान की सुबह होगा वहाँ से आज जाएंगे कल तक दुकान के बाहर सब ये करना होगा ये करके अच्छी कर देंगे तो ये तो कोई दिक्कत नहीं
बात कह रहे हो वही होगा। तो तुम तो बात कर रहे हो मतलब तुम अपना काम करो। काम बताने के बाद दुनिया को खबर नहीं चल पाती वो भी खड़े हुए मुश्किल आ गई यहाँ पे। नहीं ऐसा भी आया इसको बैलेंस में आ गया कुछ विजिट किया था आपके साथ ही इसमें बीच में उसको 6 घंटे 7 घंटे के लिए आ गया 17 घंटे 7 घंटे के लिए आए थे कोई विजिट करते दिन कर लिए नाइस थे उसमें हम कुछ जानते थे ना इसी का मन पैसे भागते भागते रहे उस टाइम पे तो हम एडवांस में थे तभी वहाँ से बीच में मैं दिखाता हूँ ça marche. T'es un bon fonctionnaire. इतना नहीं है भाई
Pour vous là. Oui, exact. Ils partent en premier pour pouvoir l'accueillir. Ils partent dans la fin. Et lui, elle part dans la fin. Hello. How are you? Excellent program and very busy schedule. Oh, I know. Thank you so much. Thank you. Just photographers. No.
healthcare and consumer goods on the other. Among almost 30 recommendations mentioned in the joint statement, I would like to highlight a few which are endorsed by the French and Indian CEO. A shared commitment to create value and a two-way investment flow. Both France and India recognize the need to further deepen economic ties by fostering an environment that encourages cross-border investment. By deepening financial and industrial partnerships, both nations can drive sustainable growth, boost job creation, enhance local production, and build stronger industrial capacities, ensuring long-term economic resilience and shared prosperity. Second, an acceleration of global sustainable energy innovation. The transition to sustainable energy is a shared priority, with our growing renewable energy sector offering significant collaboration opportunities. By combining India's cost-effective manufacturing and France's expertise in clean energy, both nations can drive innovation in multiple areas such as solar, wind, battery technologies, green hydrogen, and nuclear energy. Through strong partnership in research, financing, and the startup ecosystem, we can accelerate the development of sustainable solutions, fostering a greener and more competitive global energy landscape. Third, transformative capabilities in smart cities. France and India have some of the world's brightest talents in science, engineering, and digital innovation. Closer cooperation between our industry can pave the way for new transformative capabilities, particularly in the development of smart cities. Advancement in digital infrastructure, AI-driven urban management, and sustainable solutions such as efficient waste and water management, carpooling initiatives, and eco-friendly construction can significantly improve the quality of life. Fourth, the rise of smart manufacturing. Industry 4.0, moving to Industry 5.0, is reshaping global supply chain, and both France and India are well positioned to lead this revolution by leveraging robotics, AI, automation, and advanced manufacturing techniques. We have the capabilities to drive industrial efficiency, boost productivity, and maintain global competitiveness. By strengthening our cooperation in these fields, we can unlock even greater potential and achieve new milestones in smart manufacturing innovation. Fifth, AI-driven industries, a significant growth potential. AI is revolutionizing industries, from optimizing energy systems and transforming healthcare to enhancing productivity in large-scale projects. As demand for AI skyrockets, investment in data infrastructure and collaborative R&D across sectors, agriculture, manufacturing, consumer goods will be key to maintain global competitiveness. Both our nations are strongly committed to this ambition. France is investing in the talent of tomorrow through initiatives such as France 2030, while India is advancing massive AI skills development program as part of its India 2030 strategy. Together, we have a unique opportunity to shape the future of AI through innovation, cooperation, and shared expertise, as highlighted by the recent AI Summit, where some of you participated. And finally, a call for regulatory simplification and stronger engagement. Business leaders on both sides emphasize the need for a more efficient and predictable regulatory framework to facilitate investment, partnerships, and technological exchanges, ultimately strengthening economic cooperation between our two nations. Over the years, through cooperation and mutual respect, we have built a solid foundation of trust and understanding, enabling us to pursue shared ambition and aspiration. It is this spirit of collaboration that has allowed us to achieve remarkable milestones and tackle complex challenges together. By fostering regular high-level dialogues and advancing joint initiatives, we will further strengthen our ties and establish an even more robust framework for cooperation. Thank you all once again for the energy you dedicate to strengthening the Franco-Indian economic relationship. May the bond between France and India continue to thrive
inspiring other nations to forge strong partnership based on trust, shared value, and a common vision for a better world. Thank you. Harry, my friend. Honorable Prime Minister Modi, His Excellency President, Republic of France, the CEO Forum is meeting against the backdrop of AI Action Summit in Paris, marking a defining moment in shaping the future of responsible AI. It reinforces Prime Minister's vision of AI as transformative force for India's development, emphasizing innovation, ethical use, and inclusivity. This also aligns with President Macron's vision of AI, emphasizing a balanced approach that fosters innovation while ensuring ethical oversight. The Indo-French CEO Forum met for 14th time today. During our discussions, we felt there is a huge interest to increase our engagement on both sides. So I discussed with Paul, and we decided to make 5 task forces, which will have minimum of 2 CEOs participating on both sides. This will recommend a roadmap to identify opportunities for faster growth in different sectors. First, being AI. Both our countries want to use AI, but we also want to produce AI. I suggest that there is opportunity to establish Indo-French AI research centers between Indian institutes like IIT and IISc, where there are already schools of AI with the French counterparts such as INRIA and CNRS. We develop Indo-French AI accelerators, bilateral investment in AI startups to build foundation models, joint AI initiatives in defense, fintech, cybersecurity, and e-commerce. The second area is of sustainability and green economy and smart cities. France is a leader in green technologies, and India is already scaling up renewable energy, green hydrogen, carbon capture, and circular economy. By combining India's fast urban expansion with France's smart city expertise, both countries can build AI-driven, future-ready cities that are sustainable, efficient, and secure. Third, to drive the next wave of manufacturing excellence, India and France can collaborate on smart manufacturing and digital innovation. There is a strong need to move from selling to India to make in India, for India, and for the rest of the world. There are 3 areas that we identified is to build ecosystem on aerospace and defense. Already, there is a lot of design and manufacturing of components which have moved to India. Presently is asymmetric because we import much more than we produce in India. We are hoping that this will grow from defense to even commercial aerospace. Secondly, to build ecosystems for semiconductor manufacturing. We already do design. We are hoping to do fabrication, which will require chemicals, different gases, which French companies produce. And of course, then we buy a lot of semiconductors. Thirdly, the partnership in new space area, joint R&D and sourcing of components. We have many Indian startups in space which have come with us. They are sending rockets to space at only in the last 5 years of development. Fourthly, India and France both have a very thriving startup ecosystem. The need of the hour calls for creation of an India-France startup platform to enhance access to funding, technology mentorship for both Indian and French companies. Fifth area is in the area of biopharmaceuticals.
India is moving from generics to innovative pharmaceuticals. We have the best talent available for R&D partnership to discover new drugs. There is also an opportunity to create drugs for unmet needs in both our two countries. Lastly, while we find exciting opportunities to partner in many sectors, we both need to address regulatory challenges. Non-tariff barriers like CBAM, restriction on technology transfer, and ease of doing business. Mr. President, we seek your help to reduce regulation on our negotiations of FTA with European Union. From the French side, regarding ease of business, I can assure you from the Indian businesses, the Indian government is working on continuous reform of indirect tax, direct tax, and reforms on all regulatory acts which affect the business. Lastly, I must add that India is no longer just a market, it's a global force shaping the future under our Prime Minister Modi. With bold reforms, strong leadership, we are poised to lead the world in innovation, sustainability, and inclusive growth. In this context, today's AI Summit was a grand success, and may I use this opportunity to convey my deepest appreciation to our two leaders. Thank you. Your Excellency, President Macron, यहाँ उपस्थित भारत और फ्रांस के इंडस्ट्री लीडर्स, आप सबको नमस्कार। बॉन्जूर। इस रूम में मैं एक अद्भुत ऊर्जा, उत्साह और डायनेमिज्म को महसूस कर रहा हूं। ये केवल एक सामान्य बिजनेस इवेंट नहीं है, ये भारत और फ्रांस के बेस्ट बिजनेस माइंड का संगम है। अभी प्रस्तुत की गई सीईओ फोरम की रिपोर्ट का स्वागत है। मैं देख रहा हूं कि आप सब इनोवेट, कोलैबोरेट और एलिवेट उस मंत्र को लेकर के चल रहे हैं। आप सिर्फ बोर्डरूम कनेक्शंस नहीं बना रहे हैं, आप सब भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी मजबूती दे रहे हैं। साथियों, मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ इस फोरम से जुड़ना मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। पिछले 2 वर्षों में यह हमारी 6ठी मुलाकात है। पिछले वर्ष राष्ट्रपति मैक्रोन हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। आज सुबह हमने साथ में एआई एक्शन समिट को चेयर की। मैं राष्ट्रपति मैक्रोन को इस सफल समिट के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, भारत और फ्रांस केवल लोकतांत्रिक मूल्यों से ही नहीं जुड़े हैं। हमारी दोस्ती की नींव डीप ट्रस्ट, इनोवेशन और जन कल्याण की भावना पर आधारित है। हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों तक ही सीमित नहीं है।
हम वैश्विक समस्याओं और चुनौतियों के समाधान में मिलकर सहयोग दे रहे हैं। मेरी पिछली यात्रा के दौरान हमने अपने साझेदारी के लिए 2047 रोड मैप बनाया था। उस पर चलते हुए हम हर क्षेत्र में सहयोग को व्यापक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, आप में से अधिकतर कंपनियां भारत में पहले से मौजूद है। एरोस्पेस, पोर्ट्स, डिफेंस, डेयरी, केमिकल्स और कंज्यूमर गुड्स जैसे अलग अलग क्षेत्रों में आप सब है और काफी एक्टिव है। कई सीईओ से मुझे भारत में भी मिलने का अवसर मिला है। भारत में बीते एक दशक में जो बदलाव आए हैं उससे आप भली भांति परिचित हैं। हमने एक स्टेबल पॉलिटी और प्रिडिक्टेबल पॉलिसी, ये इकोसिस्टम स्थापित किया है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के पथ पर चलते हुए आज भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, विश्व की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है, जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। भारत की कुल युवा टैलेंट फैक्ट्री और इनोवेशन स्पिरिट वैश्विक पटल हमारी पहचान है। आज भारत तेजी से पसंदीदा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। हमने भारत में एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम मिशन लॉन्च किए हैं। डिफेंस में हम मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप में से कई लोग इससे जुड़े भी हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। इस सेक्टर को के लिए खोल दिया गया है। हम भारत को तेजी से एक ग्लोबल पावर हाउस बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है और इस पर हम सालाना $114 बिलियन से अधिक का पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। हमने मैसिव स्केल पर रेलवे ट्रैक बिछाए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रेलवे को मॉडर्नाइज और अपग्रेड कर रहे हैं। 2030 तक 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर हम तेजी से अग्रसर हैं। इसके लिए हमने सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया है। क्रिटिकल मिनरल मिशन भी शुरू किया है। हमने हाइड्रोजन मिशन हाथ में लिया है। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग को बल दिया गया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जा रहा है। हम एसएमआर और एएमआर टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं। साथियों, आज भारत डाइवर्सिफिकेशन और डी रिस्किंग का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। कुछ दिन पहले हमारे बजट में न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स अंकित किए गए हैं।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नए कदम उठाए। पिछले कुछ वर्षों में हमने 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को रेशनलाइज किया है। ट्रस्ट बेस्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए एक हाई लेवल कमिटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स गठित की है। कस्टम रेट स्ट्रक्चर को रेशनलाइज किया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से भारत ट्रेड नेट की शुरुआत की जा रही है। ईज ऑफ लिविंग की दिशा में नया सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स कोड हम ले आ रहे हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है और नए सेक्टर्स जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर को 100% एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। इन सब इनिशिएटिव्स को आप जरूर ध्यान से स्टडी करें। मैं आप सबको कहता हूं कि भारत में आने का यही समय है, सही समय है। भारत की प्रगति में सभी की प्रगति जुड़ी है। इसका एक उदाहरण एविएशन क्षेत्र में देखा गया, जब भारतीय कंपनियों ने हवाई जहाजों के लिए बड़े ऑर्डर्स दिए और अब जब हम 120 नए एयरपोर्ट्स खोलने जा रहे हैं, तो भविष्य की संभावनाओं का आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, भारत के 1.4 बिलियन लोगों ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है। चाहे डिफेंस हो या एडवांस टेक्नोलॉजी, फिनटेक हो या फार्मा, टेक हो या टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर हो या एविएशन, हेल्थ केयर हो या हाईवेज, स्पेस हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप सभी साथियों के लिए इन सभी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट्स और कोलैबोरेशंस की अनेक संभावनाएं हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। जब फ्रांस की फिनेस और भारत का स्केल मिलेगा, जब भारत का पेस और फ्रांस का प्रिसिजन मिलेगा, जब फ्रांस की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलेगा, तो सिर्फ बिजनेस लैंडस्केप ही नहीं, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक बार फिर अपना कीमती समय निकालकर यहां आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Namaste. Thank you, Mr. Prime Minister. My dear friend, Narendra Modi, ladies and gentlemen, dear CEOs, dear ministers and ambassadors, thank you very much for joining us today for this new CEO Forum. This is a new edition, and both of you reminded us I'm in the very latest edition, and I want to congratulate you for your commitment to this format and your commitment to cross investments and cross deals. It's true, last year I was present, and thank you very much at your invitation for National Day, Independence Day, and you were here for Bastille Day the year before, and we met here already in the same format. So I think this permanent meetings we have, and the number of meetings and the quality of meetings and interactions highlights very well the quality of the bilateral relation. And I want to thank you, Mr. Prime Minister, for having accepted to co-chair the AI Action Summit together with us. We will go right after together in Marseille, and next year you will host a new AI Summit in your country.
both of you, and I want to thank the two co-chairs. You perfectly recapped the existing strategic partnership since 1998 and the number of projects we have, and Mr. Prime Minister detailed a lot of things, so I don't want to repeat, but in defense, space, energy, technology, we have a lot of existing partnerships, and you are clearly to go faster and further. Our two countries during the past few years committing to renew and enhance this partnership. And I'm very happy that we launched new projects in industry, aircraft, defense, technology, and more broadly, our collaboration on emerging technology as well is an area of great promise. Smart cities was described by both of you as clearly an area where we have expertise on both sides with great companies and great competences. And this is clearly something, a new field of cooperation. And I'm very excited to see as well new projects. So now the top priority, and a lot of you now, I know, did confirm a lot of new investments in energy, in industry, in services, in consumer, in the food sector. So it's very important that we follow up, and it's very important that we build new investment on both sides. On top of what Mr. Prime Minister detailed, I just would like to insist on very simple ideas. Number one, we do share the same approach of the global order. And I think it's very important for business leaders, and it's very important for you to team up on this basis. The Indo-Pacific strategy launched in spring 2018 in my first trip to India. And everything we built on this basis is the in-depth conviction from both of us that we don't want to live in a world of confrontation between the US and China. But we don't want to be dependent on none of them. So this is a strong belief in a world of respect and sovereignty, of engagement, but independence. And the Franco-Indian axis, and through our two countries, the axis between Indo-Pacific and European Union, I think makes a lot of sense because it creates an area of cooperation between big powers. And this is why we can cooperate on defense, we can cooperate on energy, on technology, on very sensitive issues, because we do it with a perspective not to create new dependencies, but clearly on this basis to elaborate new cooperation, to reduce our dependencies vis-à-vis the two big guys in the rooms, and in order to be stronger. Based on this strategic conviction, the second point I would like to highlight is that connectivity will be key in order to increase cooperation. And we know very well that in this new order from the Middle East to Caucasus, so many regions, we have war, we have a lot of destabilizations. We know that we have as well a lot of infrastructure projects, but sometimes some of these great infrastructure projects were a little bit biased by one or another big guys in this planet. This is why connectivity based on this conviction of an open and cooperative world and this Indo-Pac connection, I want to insist on the India, Middle East, Europe Economic Corridor, IMEC. We launched it during the G20 you chaired, Mr. Prime Minister. And it brings both of us, because we are the two extremes of this corridor. And this is a fantastic catalyst. Global trade needs secure, resilient, and durable networks. And in terms of energy, transportation, digital infrastructure, we see IMEC as a great catalyst. And we will see that directly with Marseille tomorrow and the port, which will be clearly one of the entry point or final point of IMEC. And we will catalyze a lot of investment, but as well a lot of very concrete projects. The third point
is to insist on the three great pillars of this world: energy and climate change, defense and security, and artificial intelligence. Here are the three roles of investment. We know that we will have to invest trillions in these fields. We do cooperate on these fields, all of them. We do want to do more, and we do share as well the same values. Defense and security, no need to insist on that. It's based on the geopolitics we do believe in. On energy, we launched together in 2018 the Alliance for the Solar International Alliance. And clearly, we want to team up and deploy more and more projects in this field. On nuclear energy, we do cooperate and we want to do more. And it's part of the, obviously, the holistic solutions we want to provide. And obviously, third, AI, you were here. I always remind people that every year, you train 1 million engineers. It's the equivalent of the US plus Europe. A lot of them are more and more focused on AI. France is number one in Europe in AI, and we announced 109 billion euro investment. Teaming up together, as we started to do with researchers and students, but as well through data centers, but because it is based as well on this vision of cooperation in this order, makes a lot of sense and will create new opportunities for our business leaders. My final word will be about the necessity to invest more on the two sides beyond the existing trade and trade relation. Indeed, I think it's very important in the years to come to have more and more Indian investors on the French territory. We've been number one in terms of attractiveness during the past few years, since 2018. We will announce a series of new big investment here, and we reform labor law, pension scheme, and we will now accelerate. We have a lot of existing assets as low carbon available energy, which I think is in this world is great for the environment, plus the quality of the healthcare and the education system. And on top of that, I want to insist on the fact that in the months to come, we will put our energy to accelerate at the European scale with a big simplification program, with a big competitiveness agenda, through the deepening of the single market on key sectors, telco, finance, and so on, and with the elaboration of the capital market union in order to accelerate as well this one. I want France to be for you the entry point on this market of 450 million inhabitants and consumers, one of the best of the world, given the clearly the purchasing power of a lot of them, but a market you know well and you love. And this is why I want to encourage here Indian investors and Indian corporates. You started, I congratulate you recently, but to accelerate and increase your investment in France in this very moment. Thank you very much for your hard work and once again for your common initiatives. Our ministers and teams will follow up as well on the very precise requests made during the sessions. I was informed by what was raised by, on both sides, CEOs. And the Choose France Summit will take place on May the 19th, providing a prime occasion to explore new prospects. And I want to invite, obviously, ministers, but as well CEOs and investors to come to Versailles in order to try to finalize at this occasion new investment. And I'm very happy with the perspective to have next year, not just an AI summit, but the occasion to follow up with Prime Minister Modi, a bunch of new cooperation on both sides. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.
I will welcome you at the airport. Yeah. And I bring you the plane from Marseille.
you.